भाषण सुनती है सिंगापुर में, घर वालों से कहती है मैं रानी झांसी रेजिमेंट ज्वाइन करने जा रही हूँ। घर वाले कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है, उसको ऊपर के कमरे में बंद कर देते हैं। रात को 12:30 बजे वो अपनी चुन्नी नीचे डाल के खिड़की से छत से कूदती है, उस खिड़की से भाग के आती है, चोट लगती है और 1 बजे रात को रानी झांसी रेजिमेंट के दरवाजे पे आके खड़े हो जाती है ट्रेनिंग कैंप पे, दरवाजा खोलो मैं ज्वाइन कर लिया। एक और बच्ची, उसके घर वाले उसे लेने आ जाते हैं। बहन कहती है तूने जो ज्वेलरी पहन रखी है ये हमारी है, वो उतार के दे देती है। फिर बहन कहती है तूने जो कपड़े पहन रखे ये भी हमारे। हाथ के अंदर जाती है, एक रानी से कपड़े बदल के कपड़े ला के दे देती है। तो बहन कहती है तू हमारे लिए मर गई, आज मैं इन कपड़ों को जला के तेरा श्राद्ध करूंगी। वो जवाब देती है हाँ मैं तुम्हारे लिए मर गई हूं और आज मैं अपने लिए पैदा भी हुई हूं, भारत मां को आजाद करने। ये एक जज्बा था जो उसके लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, कृपया ध्यान दें, even if they had to hire PR, they used to hire PR services who had actually no clue of how the book market works. So, and therefore they could not really deliver the kind of results that were required for a but today there are so to people who are into another thing I wanted to address. So when it comes to marketing for books, right, there's some strategies which would be very different from the way marketing works for other products. So can you shed some light on that? That how is book marketing, different from marketing for any other product? See, that's a very good question and I'm glad you asked it. Amrita, the thing is that I used to work in white goods and consumer durables before I entered publisher. And the marketing there was like and there was telecom also, so marketing was like an overnight strategy change, right? Coming from that world to a world which was extremely slow in adapting and adopting stuff. But over my years of experience, one thing I realized that why is it that general PR agencies are not able to do book marketing well is because it's a very complicated product. See, unless you understand your product well, you will not be able to market it. How many of, in fact I should not say this, but a lot of publicists even in publishing don't read books. But frankly, how many of us really read that book and understand the strengths well to ensure that we are marketing it well? Unless you know your product well, how will you put it out in the market? How will you know who is the target audience? Author जब लिखता है, he or she feels मैं मेरी किताब तो सब पढ़ सकते. That's a general that we are people of 140 odd billion people and हमारी किताब तो सब पढ़ेंगे तो मतलब कम से कम 100 billion तो बिकनी चाहिए, right? But that's not the case. In reality, every book has its own target audience, and unless you are able to identify that target audience, use your entire machinery, that is your media, your influencers, your bloggers, your platforms where you are to make the author visible, unless you are able to put your entire machinery in a structure which actually allows you to reach that target audience, you will not get the desired results. So that is the problem. I think the problem area is there. That, why other agencies are not able to deliver it is because it's too complicated a product to understand and then work a strategy. Thank you, Rebecca. I'll ask you a very specific question. Now, when we're talking about marketing, like you mentioned, to what extent can a literary agency or an agent, because you work with so many authors yourself, control the investment that the publisher is giving to a certain book in terms of marketing? And this I'm asking you considering the fact that at any given point in time, an author will still have just 1 or 2 books in the pipeline, but a publisher will have many titles in their publishing portfolio. So for any book that you choose to represent, how does the whole prioritization of a particular title for marketing from the publisher's end go, and how far are you able to sort of,
kind of regulate it or be on top of it? Sure. I think that's a very pertinent question. I'll also just lean on what you said earlier. You mentioned Shark Tank. Now, in Shark Tank, the benefit is if you get an investor to invest money. So money is the end motive of making a pitch. If you correlate it with the book parlance, it is not money. It is getting either a book deal first or getting your book successful by sales. So it's not money. Because what will happen is that, and I often tell a lot of my authors that, if you are investing something in branding, invest it precisely for that. Invest to create a good brand so that it helps you for your future books. If you're thinking that I'm investing 50,000 rupees, for example, and I will make 1 lakh rupees out of the 50,000 that I'm investing, probably that's not going to happen. Because your book sales may be over 1 lakh or over 2 lakh rupees, but you're getting 10% of that or 7% of that as the royalty. So even if you're selling 1 lakh, you're getting 10,000 rupees already. How much have you spent? 50,000. But so you cannot and should not compare it in those terms. What that will do is that when people see that, this book is sold, books worth 1 lakh, publisher will say, okay, please come, do a book with us next time around. And that's how your brand grows. You also need to understand why agencies earlier haven't been able to do this. Like I mentioned, there weren't agencies earlier, there weren't literary agencies earlier. In fact, I think a lot of literary agencies still do not look into the marketing aspect of things, and that is where I think makers are trying to make a difference. But a very important point she mentioned was that the product is different. Here, a product is a one-time product of 200 or 300 rupees only. So you may come back to me saying that, look, I use a soap, but that is only for 10 rupees. In comparison to that, your book is 30 times the amount. But as I said, it is a one-time book. You are just investing once. You will have a bath all your life. So you keep on buying soaps 10 into, a million times. But that is what it is. In fact, it's very funny that people don't understand that the literary industry per se is an industry of lesser margins. The product itself is of 200, 300 rupees. What do you do? I was having a chat with, a celebrity filmmaker, and he was telling me that, so I want to do a book, and we discussed what the advances possibly for him could be like. And he told me that, I told him the numbers, and he said that, this is also what I've heard from my colleagues who've done books. But I said that we have a 100-page script on a Netflix scale. So Netflix मुझे 1 lakh rupees per page देता है, for that 1 page of script. So I'm doing a 100-page script. I'm earning 1 crore rupees straight away. But even if I'm a celebrity and I do something great over here, it'll probably be 1/100th of something if at all they're getting in advance. So that is different. So then he said that, okay, I understand. It's for branding. People don't know me by name, but if I have my face on the cover, it will help. Or very recently, just 3 days ago, I was having a chat with a singer who we represent, and he had connected me with a music director friend of his for a book. And we had of course set up terms and conditions. And I spoke to मैं सदीनामा पत्रिका से हूँ और आपसे हिंदी में ही चाहूँगी कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर हिंदी में दें। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ब्रांडिंग या प्रकाशक या लेखक में कुछ तत्व मौजूद होते हैं तभी पुस्तकें बिकती है, या फिर केवल ब्रांडिंग के अनुसार पुस्तकें बिकती है? क्योंकि मैं खुद एक प्रकाशक भी हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी कि प्राय प्रकाशक ब्रांडिंग और लेखक ऐसे लेखक खोजते हैं जिनसे कि उनकी पुस्तकें बिकें। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो मैं पहले बस ये कहना चाहूँगा कि लिखा इस पर बताया कि वो ज़्यादा शायद अच्छे तरीके से इसको बता सके। पर जैसा मैंने पहले कहा था कि जब मैं एक लिटरेरी एजेंट के तौर पे काम करता हूँ और कोई अपनी मैन्युस्क्रिप्ट मुझे भेजता है, तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि वो कहानी कितनी अच्छी है या वो कहानी मुझे कितना छू रही है। अगर वो कहानी मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाएगी तो मैं उतना अच्छा उसमें काम नहीं कर पाऊंगा। तो जहाँ तक एक लिटरेरी एजेंट और लेखक की बात है, वहाँ पर ये बेहद जरूरी है कि आप एक अच्छी कहानी लाएं, क्योंकि वही मापदंड है सबसे पहले जो प्रकाशक भी देखेगा। अगर आप
अपनी पहली किताब कर रहे हैं या दूसरी किताब कर रहे हैं, तो ये बेहद जरूरी है कि जो कंटेंट है वो कीन हो। पर क्योंकि आप अपनी पहली और दूसरी किताब कर रहे हैं, तो ये भी आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि आप उसके साथ एक ऐसा प्लान कीजिए जो शायद प्रकाशक को इंटरेस्ट करे और उन्हें बोले कि हाँ ये किताब भी अच्छी है और ये प्लान भी अच्छा है, इस नए लेखक को हम मार्केट में लाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसे प्रकाशक हैं जो शायद उन लेखकों को भी प्रकाशित कर रहे हैं जिनकी शायद किताब उतनी अच्छी ना हो लेकिन वो बिकती है। तो इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो उसके अंदर 100% अप्रूवल रिकॉर्ड किसी का नहीं होता। आप शोले भी बनाएंगे तो कुछ 10 लोग होंगे जो बोलेंगे कि अच्छी नहीं है, और आप राम गोपाल वर्मा की आग भी बनाएंगे तो 10 लोग होंगे जो बोलेंगे बहुत अच्छी है। तो कितनी अच्छी किताब है या नहीं है ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन है, पर क्योंकि वो लेखक अपने आप को पहले प्रूव कर चुके हैं तो आसान हो जाता है प्रकाशक को बुक लेना, क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छा करेगी, और जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो वो और आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। उसका एक सिंपल एग्जांपल है दैट हो सकता है कि रोहित शेट्टी एक फिल्म बना रहे हो और आपको शायद स्टोरी उसकी नहीं अच्छी लगी है, पर आपको पता है कि रोहित शेट्टी अगर वो पिक्चर बनाएंगे तो 100 करोड़ उसको पिक्चर कमाएगी, राइट? तो आप उस एज अ प्रोड्यूसर आप बोलेंगे हाँ रोहित शेट्टी कम लेट्स मेक समथिंग बिकॉज़ वी अर्न मनी। रिजर्व ये अगर मैं जाता तो वो बोलेंगे कि आपकी कहानी कितनी अच्छी है, क्योंकि मेरा तो एक वर्ड नहीं है उसमें, पहले मैं एस्टैब्लिश कर लूंगा अपने आप को, फिर हम लीवे दे सकते हैं। मतलब ये कि आप खराब काम करें आगे जाके, लेकिन थोड़ा लीवे मिल सकता है बिकॉज ऑफ द वर्क यू डन इन द पास्ट। सो ये एक कड़ी है जो दोनों की जरूरत होती है। जब वैसे प्रकाशक जो होते हैं, हाँ प्रकाशक जो होते हैं वो प्रकाशक क्या ब्रांडिंग हो जाते हैं केवल नए लेखकों के लिए? लेकिन मैं आपके सवाल जो दोनों सवाल हैं उनका एक सिंपल सा आंसर दूंगी। अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांतों के अनुसार तो मैं एक लेखक हूँ, मैंने अपनी पूरी मेहनत जो है उस किताब को लिखने में लगा दी। कायदे में सिद्धांत के हिसाब से मेरा काम वहाँ खत्म हो जाता है ना। फिर प्रकाशक का काम शुरू होता है कि वो उसे अच्छी पैकेजिंग करे और उसे मार्केट में भेजे, ठीक है। लेकिन जहाँ ये कार्य करने में आप हो सकता है 100 लोगों तक अपनी बात उस किताब के माध्यम से पहुँचा सकें। आप अगर ब्रांडिंग वाला एस्पेक्ट उसमें जोड़ देंगे तो आप वही 100 लोगों की बजाय 1000 लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की सक्षमता रख पाएंगे। तो इसमें ना हम सिद्धांतवादी होकर इमोशनल होकर ये सोचें कि ये ब्रांडिंग का काम है, ये तो मेरा तो लिखने का काम है, लेखन का काम है, मुझे उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है वो आज का लेखक हम नहीं चाहेंगे कि गरीब रहे, हम नहीं चाहेंगे कि वो झोला लटका के बेचारा जो है अपने दो वक्त की रोटी के लिए जो है स्ट्रगल करे। तो आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं और समृद्धि लाना चाहते हैं तो लेखकों को सबसे पहले समृद्ध होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए लिखकर अपनी सोच को छोड़ने जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस जो कश्मकश और उसमें जो कॉन्वर्सेशन है उसमें ना घुस के हम अपनी अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकते हैं वो करें। जरूर जरूर, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। For self-publishing, so it was absolutely amazing to listen to all of you and understand the value. But one thing I always say that even if you're, especially you're the first-time writer, you don't really have that much of a linkages in your reader groups and all that. You're trying to find your reader group. I think in that situation, it is absolutely necessary that some people who do the marketing actually read the book. It has a lot of aspects that are disruptive. It can really change the dialogue. It can create dialogues. But I think it is very much in the hands of people who market your book or promote your book or publish your book, because that is where you need the support. That's where amazing literature comes up. That's where amazing new ideas come up. So that's what I would expect That is people to true, do. but what I want to hear is that, why it becomes important then to get a good publisher. As you mentioned that you self-published. So what I always tell authors is that, authors who self-publish vis-a-vis authors who get published traditionally, where authors who self-publish lose out is in the matter of perception. So, for example, if you're meeting someone and they ask who's published it, and you say X has published it, and it's a self-publishing house.
I may not want to buy the book in any scenario, but I'm like, oh, probably the book wasn't that good, or probably you may not have got, a publisher, which is why you have to pay and get published. We can all in comparison to the fact that I go and I say that, I've been published by, say, HarperCollins. It is right in front of me. So, नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।